आज हम कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। एक क्वेश्चन पेपर है, उसके रिलेटेड था वो। इसका नाम है एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है एक्सपोनेंट्स। क्या नाम है? एक्सपोनेंट्स। ठीक है, एक्सपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ये नहीं, हाँ ये ठीक है। सब लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रही है ना? ओके हाँ सर, दिख रही है। ठीक है, देखो मैं आज बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 2 की। किसकी बात करेंगे हम? क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। ओके, देखो तुम लोग चुप नहीं बैठोगे ना तो मैं पढ़ाऊंगा नहीं तुम लोगों को। अब सब लोग ध्यान से सुनो, मैं कंसेप्ट बताने वाला आज। ठीक है, सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तुम्हें पता होना चाहिए व्हाट इज मीन बाय एक्सपोनेंट। ठीक है, एक्सपोनेंट क्या होता है? यहाँ पे देखो, द लार्जेस्ट पावर ऑफ 2 दैट डिवाइड्स 200 फैक्टोरियल अपॉन 100 फैक्टोरियल, ये निकालना है। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसमें मैं सबसे पहले तुम लोगों को एक्सपोनेंट्स के बारे में बताऊंगा, फिर हम कुछ चीजें नई नई सीखेंगे। ठीक है, ओके। अब देखो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना बच्चों, वो क्या है पता है क्या? आज हम पहले सबसे पहली चीज सीखेंगे वो है GIF। क्या बोलो? GIF। इसका नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सेकंड जो चीज हम सीखेंगे आज है, आपको अगर मालूम है, जो ऑफलाइन में थे उनको भी मालूम रहेगा शायद, और जो ऑनलाइन है उनको भी मालूम है। मैं जो सेकंड चीज की बात कर रहा हूँ वो है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल मालूम है ना तुम लोगों को? ठीक है, फैक्टोरियल के बारे में आज हमें देखना है। दो अलग अलग कंसेप्ट है। ठीक है, GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड फैक्टोरियल। ओके, फैक्टोरियल मीन्स व्हाट? सी हियर, फैक्टोरियल में क्या होता है देखो। सबसे पहले फैक्टोरियल सीखेंगे, वेरी सिंपल है, सबको मालूम भी है ये। 0 factorial has value 1. 0 factorial has value 1. 1 factorial is also 1. 2 factorial is equals to 2 into 1, which is again 2. 3 factorial is again 3 into 2 into 1, which is equals to 6. 4 factorial is 4 into 3 into 2 into 1, which is again 24. Okay, and so on, and we have to calculate it about 10 up to 10 factorial. Okay, 5 factorial has values 120. 5 factorial has value 120. 6 factorial is 720. 7 factorial is 5040. Okay, 8 factorial is 40320. 9 factorial is 0 8 8 2 3 6. Okay, and 10 factorial is 3 6 2 8 8 0 0. Okay. These are the values of factorial. You know the meaning of the factorial, the number from for which we have to find factorial. We have multiplied all the integers from that number to 1. Okay, from that number to 1. See here, 4 factorial is from 4 to 1. We have multiplied the all integer values. Okay, multiplied by all integer values. This is known to be a factorial. This sign is known to be a factorial sign. Okay, now this all are understood about that. All are get you about the factorial. Is there anything? Anyone have doubt about factorial? Okay, now see the next. Now I told about you the greatest integer function. What is the greatest integer function? Okay, see here. ठीक है, जल्दी लिखो, नोट इट डाउन। फैक्टोरियल क्या लिखा है? विघ्नेश, नोट इट डाउन। यस, फैक्टोरियल लिखा है ना मैंने सब।
0 का क्या है, 1 है। 0 का फैक्टोरियल 1 रहता, ये स्टैंडर्ड है, ठीक है। 0 फैक्टोरियल इज 1। फैक्टोरियल मतलब वन कैसे आया सर वो? फैक्टोरियल है ना, इट इज द नोटेशन, ओके, ये नोटेशन है। इसकी वैल्यू क्या रहती है, देखो 0 फैक्टोरियल 1 रहता, 1 फैक्टोरियल वापिस 1, 2 फैक्टोरियल है ना 2 इंटू 1, मतलब जो भी नंबर का हमें फैक्टोरियल फाइंड करना है ना, वहां से सारे इंटीजर्स वैल्यूज का 1 तक मल्टीप्लीकेशन है। अब 5 फैक्टोरियल में क्या क्या आएगा बोलो, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। सिमिलरली 6 फैक्टोरियल में 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ओके, each time we have multiply all the integer values from the given number up to 1. Okay, now see the next, why 0 factorial is 1 ना, इसका आपको प्रूफ चाहिए 0 factorial 1 क्यों होता है। नोट हियर दैट व्हेन आई रोट 5 फैक्टोरियल ना, तो मैं 5 फैक्टोरियल को ऐसे लिख सकता क्या बच्चों, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, क्या लिखेंगे इसको, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, ठीक है। सिमिलरली देखो 4 फैक्टोरियल मतलब क्या रहता, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल रहता है ना, ऐसे सब लिख सकते हैं। तो n फैक्टोरियल क्या आएगा बोलो, n फैक्टोरियल n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल आए, ठीक है, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। अब सिंपली पुट n इक्वल्स टू 1, n को क्या पुट करेंगे 1, तो ये LHS क्या आएगा बोलो, 1 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1 इंटू 0 फैक्टोरियल आए, ठीक है। अब 1 फैक्टोरियल 1 रहता और ये 1 इधर आया, विच इज इक्वल्स टू 0 फैक्टोरियल, सो 0 फैक्टोरियल इज ऑलवेज 1। ओके, 0 फैक्टोरियल क्या रहता, 1 रहता। See here, n factorial can be written in the form of n into n minus 1 factorial. Okay, if we put n equals to 1, if we put n equals to 1, then we get 1 factorial is equals to 1 into 0 factorial. Okay, when I dividing by 1, we will get 1 factor 1 upon 1 equals to 0 factorial. So the 0 factorial is always 1. 0 factorial is always 1. Okay. ठीक है, चलो अब हो गया। अब नेक्स्ट आगे बढ़े, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देखते हैं, अभी फैक्टोरियल हो गया, ठीक है। अब नाउ सी द टुडेज अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेशन इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके, इसके पहले का बताना, स्क्रीनशॉट लेना है सर। 0 का और 1 का बताओ सर, रिपीट करो सर। अरे तुम जल्दी लिखो ना, ऐसे टाइम पास करोगे तो कैसे होगा। हो गया क्या, स्क्रीनशॉट निकाल के बोलो जल्दी। यस सर, डन। ठीक है, चलो। किसी का फैक्टोरियल लेना है तो मैं क्या बोल रहा, उस नंबर से 1 तक क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 10 फैक्टोरियल मुझे निकालना है, तो 10 फैक्टोरियल में क्या क्या आएगा, 10 आएगा, 9 आएगा, 8 7 6 5 4 3 2 1। लास्ट नंबर हमेशा हमारा क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा बोलो, 1। ओके, ठीक है। अब देखो आगे, ठीक है। अब सुनो ध्यान से सब लोग, अब मैं क्या बता रहा हूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। किसकी बात कर रहे हैं हम, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। Okay, just a minute, I have to draw a graph.
Please keep quiet. Keep quiet, please. Okay, now see here. This is our x-axis, x dash, and this is y-axis, y dash. This is origin 0 comma 0. Okay, this is origin 0 comma 0. Okay, now see here. Here is 1, 2, 3, 4, 5, and here -1, -2, -3, -4, -5. Here 1, 2, 3, and here also -1, -2, -3, and so on. Now, students, you know about the all the intervals. Okay, interval size. Okay, first see here. This is known to be closed interval. This is known to be closed interval. Okay, closed interval. This will be a open interval. What is the difference between the closed interval and open interval? In closed interval, the extreme values are included. Extreme values are included. But in open interval, extreme values are excluded. Okay. Extreme values are excluded. For example, if I have taken here 2 and 3, then in closed interval, I have the values from 2 to 3. Okay, all values from 2 to 3 and including 2 and 3 itself. Okay, but in open interval, when I write 2 and 3, it means that it takes the values in between 2 and 3. Okay, in between 2 and 3. There are some other notations which are known to be semi-open or semi-closed. For example, the first one is I have write here. First is closed, then it is open, and second one is first is open and second is closed. Okay, that means two is included, but three is excluded, and here 2 is excluded and 3 is included. Okay, these are the four notations for the intervals. These are the four notations for the intervals. Okay, now if you know about the intervals now, then you have to if you know about the intervals, then you will be understood greatest integer function very easily. Okay, now note that when I told about the open interval na, then I make a notation that it is a like this circle. Okay, open circle means it is a see, if I have to draw a number line, if I draw a number line, okay, here I draw a separate number line and I have to represent these sets, then what I do, if I have to draw this interval open 2 to 3, then here I 1, 2, 3, and this will be a 0, then only we have to make this type of a notation. Okay, this is 2 to 3. That means it is a open interval. It is a open interval. And when I say about closed interval, let me give one example more. If I have to draw a closed interval from 0 to 1 in number line, then we fill these circles. Okay, we have to fill these circles. Okay, it means 1 and 0 are included, and this is a closed interval. And when the circles are empty, then it is used to for open set. It is used for open set. Okay, now see students, what is meant by GIF? Okay, GIF, it is used for to find the integer values of the given interval. Okay, given interval, to find the integers of the given interval, we have to use GIF. Okay, now if I have taken one interval, let us see, I have taken one interval like that from
from close 0 to open 1. Okay, from close 0 to open 1. In between all values, which values are coming, it has greatest integer function value is 0. Greatest integer function is value 0. And the notation for the greatest integer function is same as the closed interval. Okay. When I write some numbers in between 0 to 1, let us check. If I write 0.9, then value is 0. If I write 0.1, it is also 0. When I write 0, it is also 0. Each time in between from 0 to 1, okay, previous to 1, then it has value 0. It has value 0. Okay. Here I have write one line also. Just a minute. See that here, from close 0 to open 1. Okay, to open 1. Now if I have changed my interval from now, for 0 close 0 to open 1, it is always 0. From close 0 to open 1, it is always 0. If I have taken interval from close 1 to open 2, it always gives the value 1. See here, from close 0, from closed 1 to open 2. Okay, it has value 1. Now if I change it from interval close 2 to open 3, it always gives the value 2. Okay, it always gives the value 2. Okay, same like that. No, you have to take the some values in between that. Okay, if let us check, you have doubt that मेरा na, बन जाएगा if I have greatest integer function is always 1. Okay, when there is a integer between, greatest integer function, it has the same value. Okay, it has the same value, but other than integer, then take the nearest previous integer. Here see, for 0.9 I have to take 0. Okay, for 0.1 it is 0, for 0 it is 0. Okay, yes, what is your doubt? Yes, always GIF gives the single integer. Okay, single integer. Now tell me, what about if I have interval from -1 to open 0, what is the answer for GIF from online? 0. Oh, wrong na answer. See here, minus -1 to 1. 0. -1 na. What is the answer? -1. Because it is closed at 1 and open at 0. Okay. It has value -1. For -2 to -1, open -1. -2 to Minus 2. -1. -2. It has Minus value 2. -2. Okay. It takes the nearest previous integer value. Okay, nearest previous integer value. You see that, what is the another name of GIF? Anyone knows about that? What is the another name of GIF? Greatest integer function has another name from Floor his graph. function. Floor function, it is also right. And Floor function. it is also called as step function also. Okay, you see the graph, you have seen like a steps. Okay, you have seen like a steps. This is first, second, third, fourth, fifth. Okay, and so on. So it is also called as step function or floor function. Okay, now students, we have proceed about now exponents. Everyone, I think so, everyone should get the meaning of GIF now. Everyone should get the meaning of GIF. Is there any doubt? Is there any doubt? No, sir, no doubt. Okay, from online, No, sir. which students are not in the classroom? Okay, now see the next. Now we have to see about the exponents. Okay,
now we have to study about the exponents. There are some sums which are comes in the NDA also, as well as for KVPY. Okay, just a minute. Okay, students. Now see, we have learned about now exponents of a factorial function. Okay, exponents about a factorial function. Let me know what is the value of 6 factorial. What is the value of 6 factorial? 720. 720. And we write it as 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. Okay. Now see, if I write 6 as a 2 into 3 and 5 is as it is, 4 it as 2 raised to 2. Okay. 3 as it is, and 2 and 1. How many times 2 is repeated? Here 1, here 2, and this is 1. 2 raised to 4. How many times repeated? 4 times. This power is known to be exponent. This power is known to be exponent. Okay. Now, there is a direct formula to find this. There is a direct formula to find this. How we have to find? See that 2 has power 1, 2. 2 has square, 4. And 2 cube is again 8. 8 is greater than 6 na. So we have to stop. 2 वाला रिपीट करो. देखो मैंने क्या किया, 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3, 5 एज इट इज. 4 को क्या लिखा मैंने? 2 का स्क्वायर, 3 एज इट इज 2. तो 2 के कितने पावर है? यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2. कितना हो गया? 3. और ये कितना हो गया? तो 2 रेज टू 4 आया ना. तो ये 2 का एक्सपोनेंट 6 फैक्टोरियल में कितना है? 4 है. कितना है बोलो? 4. अब इसको ऐसे हम करते बैठेंगे तो बड़े नंबर्स में नहीं आएगा ना. तो इसके लिए कुछ ट्रिक होना जरूरी है ना. तो ट्रिक मैं बता रहा हूं. देखो पहले चेक करो, जिसका भी निकालना है. 2 फैक्टोरियल कितना है? सॉरी, 2 रेज टू 1 पावर कितना आया? 2. 2 का स्क्वायर कितना आया? 4. और 2 का क्यूब कितना आया? 8. लेकिन 8 6 से बड़ा है ना. 8 क्या बोलो? 6 से बड़ा है. तो 8 को हम नहीं लेंगे. ठीक है, 8 को हम नहीं लेंगे. नाउ वी हैव फाइंड द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 6 divided by, first is 2 na, first is 2. 6 divided by 2 is again 3, and greatest integer function of 3 is again 3. Okay, now see the next one. 6 divided by 4 is again 1.5 na, 1.5. Okay, then from greatest integer function it has values 1. The total is 4. So the greatest 2 has power 4. Okay, the 2 has power 4. This is the method. This is called the exponent method. This is called exponent method. Okay, note down this. I will explain again one more by taking one more example. Write down this. ओके, अब देखो, अब हमारा जो आज का एग्जाम्पल है ना, मैं वो एग्जाम्पल पे जाता हूँ. ठीक है, डायरेक्टली ये वाला एग्जाम्पल देखो. ठीक है, ये वाले एग्जाम्पल में हमें क्या करना है बोलो? 2 की पावर ढूंढनी है 200 फैक्टोरियल अपॉन 100 फैक्टोरियल में. अब मेरे पास इसका एक फॉर्मूला था, उससे इजीली हो जाता है. 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल है ना, इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ 2 रेज टू n.
2n minus 1, 2n minus 3, and so on 5 into 3 into 1. Okay, so that directly answer is 100, because when we put this 100 in that formula, then we will get the required form 200 factorial upon 100 factorial. बट अगर मुझे पता नहीं है, अगर मुझे फॉर्मूला पता नहीं है, तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा? देखो, हाउ वी हैव टू सॉल्व इट. देखो हमें क्या करना है, 200 फैक्टोरियल अपॉन 100 फैक्टोरियल में फाइंड करना है 2 का एक्सपोनेंट फाइंड करना है. वी हैव टू फाइंड एक्सपोनेंट ऑफ 2. नाउ कंसीडर अबाउट 2's पावर फर्स्ट. 2 raised to 1 is again 2. 2 square is 4. 2 cube is 2 raised to 4. 2 raised to 5. 2 raised to 6. 64, 2 raised to 7. 128, 2 raised to 8. 246. 256. 256, Now 256 is greater than 200. Now we have to stop here. Okay, we have to stop here. Now we have to find the greatest integer function from 200 divided by 2. First number is our 2, so it gives the value 100. So greatest integer function of 100 is again 100. Next, 200 divided by 4. What is the answer? 50 na, so answer is 50. 200 divided by 8, 25 na, so answer is 25. 200 divided by 16, 12.5. okay, so answer is 12. 200 divided by 32, 6.25, so answer is 6. 200 divided by 64 na, what is the answer? 3.125. okay, which is again 3. okay, which is again 3. 200 divided by 128, 1.56, which is again 1. okay, now we have over now about that. okay, now add these values, all adding these all values. okay, 1 plus 3 4, 4 plus 6 10, 10 plus 12 22, 22 and 25 is again 47, 47 plus 150, how much? 197. Pakka? Then in 200 factorial, we have 2's exponent as 197. What? 197. Now consider about 100 factorial. okay, 100 factorial. 100 upon 2, which is equals to again 50. 100 about 100 divided by 4, which is again 25. Again 100 divided by 8, which is again 12.5. again सिर्फ 12 आएगा. 248 होगा ना, 16 आएगा ना, which is again 6.66 आएगा ना, तो which is again क्या आएगा? 6. फिर क्या आएगा बोलो? 100 divided by 32 कितना आएगा? 2 point something आएगा क्या? 3 point something आएगा ना, 3 point something आएगा, तो वापिस क्या आया? 3. और 100 divided by 64, 1 point something आएगा, तो इसका आंसर क्या हो गया? 1. अब ऐड करो इसको, इसका आंसर 12.5 आया, तो ये वापिस क्या आएगा? 12 आएगा. क्या आएगा? 12. तो ऐड करो. 1 plus 3, 4 plus 6, 10 plus 12, 22 plus 25, 47 plus 50, 97 na. In 200 factorial there is a 2 raised to 197, and in 100 factorial the 2 has exponent 97, so the direct answer is 2 raised to 100. Answer is 2 raised to 100. okay, आज हमने क्या क्या सीखा बोलो? चैट बॉक्स में लिखो फटाफट.
हमने क्या क्या सीखा? जीआईएफ, फैक्टोरियल और एक्सपोनेंट सीखा। अरे हाँ कि नहीं? जीआईएफ, फैक्टोरियल और एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट समझ में आया? पक्का? ठीक। डाउट है कुछ? नहीं? ठीक। ओके चलो, बाय बाय बच्चों।